Good morning, everyone. Students, today we will revise chapter 4 Thinkers, Beliefs, and Buildings because this chapter is included in assessment 2. Students, this chapter is about the buildings, the stoops, and the thinkers and their philosophies, their beliefs. So, this chapter is important and very interesting chapter we have. Student, today we will cover the topics the glimpse of Sanchi, the background, sacrifices and debates, the messages of Mahavira and the Buddha. It means the teachings of both Jainism and Buddhism. And finally, the followers of the Buddha and stoops. So, students, first of all, let's start with the stoop and a glimpse of Sanchi. Student, what are stoops? Stoops, I can say, they are the hemispherical structure that containing relics, typically the remains of Buddhist monk, that is used as a place of meditation. A dome shaped building. Here you can see the dome shaped building is a stoop, and this is the picture of Sanchi stoop. So, student, what is Sanchi Stoop, where it is, and what is the history of Sanchi Stoop. It is very important here. Sanchi Stoop, it is a Buddhist complex famous for its great stoop on the hilltop at Sanchi town in the Raisin district of state of Madhya Pradesh, India. And student, it is located in 46 kilometers northeast of Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. Student, here you can see Sanchi Stoop, a dome like structure. And student, the history of Sanchi Stoop is very interesting because it is associated somewhere with Begum Shah Jahan and her successor and with the Joan Marshall. Student, everyone was interested in Sanchi, and especially the French people and the English, they both were interested, and they came to Shah Jahan Begum. Shah Jahan Begum that time was the ruler of Madhya Pradesh, Bhopal. So she was ruling that time, and many Englishmen and the French, they came to Begum Shah Jahan, and uh, they wanted to take away the gates of Sanchi Stoop to their countries, to their museums. So the great stoop at Sanchi is one of the oldest stone structure in India and very important monument in Indian architecture. स्टूडेंट्स, जब यूरोपियंस आए या फ्रेंच आए जिन्होंने शाहजहाँ बेगम से परमिशन ली दैट दे वांटेड टू टेक अवे द ईस्टर्न गेट्स दैट टू बी डिस्प्लेड इन द म्यूजियम इन फ्रांस, सो दिस permission was totally rejected by Shahjahan Begum. And student, what finally she did, she allowed that they can carry with themselves the copies, the plaster copies of the eastern gate of Sanchi. It means वो ओरिजिनल नहीं देंगे, वो उनकी बहुत अच्छी प्रिपेयर्ड प्लास्टर कॉपीज़ यहाँ इंडिया से लेकर जा सकते हैं अपने म्यूज़ियम्स में रखने के लिए. सो स्टूडेंट, जो शाहजहाँ बेगम है, शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इन प्रिजर्विंग द सांची स्तूप. Student, here you can see the first picture is of Shahjahan Begum and then her successor Sultan Begum. Okay, then Shahjahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum both provided fund for Sanchi Stoop to the Joan Marshall, and Joan Marshall also dedicated his important volumes on Sanchi. स्टूडेंट, शाहजहाँ बेगम ने बहुत सारी फंडिंग की है फॉर द प्रिजर्वेशन, फॉर मेंटेनिंग द सांची स्तूप, एंड जॉन मार्शल who was the director general of archaeologist survey from 1902 to 1928 in India. स्टूडेंट, उन्होंने बहुत सारी वॉल्यूम्स लिखी सांची पे. इवन
जिस गेस्ट हाउस में वो रहते थे, all the expenditure done by the Joan Marshal on Sanchi Stoop was beared by Sultan Jahan Begum. And student, Joan Marshal was a very non डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे. मोहन जोदाड़ो का जो एक्सकवेशन है वो इन्होंने ही किया था. सो कहीं ना कहीं जो सुल्तान बेगम है या शाहजहां बेगम है, बोथ प्रोवाइड द फंड्स, बोथ प्रोवाइड द मनी फॉर सांची स्तूप. इवन जॉन मार्शल के जो पर्सनल एक्सपेंडिचर थे, लाइक जिन गेस्ट हाउस में वो रहते थे, वॉल्यूम का जो पब्लिशिंग का खर्चा आया, ऑल बियर्ड बाय द सुल्तान जहां बेगम एंड शाहजहां बेगम. Then the background sacrifices and debates. It means, students, because we are talking about the thinkers, beliefs and building. The first topic, the first example we have covered of the building, Sanchi Stoop. हमने building का example किया. Now the thinkers. That time, especially in the first millennium BC, various thinkers they start coming. Like Kongzi in China, Socrates in Greece, Mahavir and Buddha in India. And student, they had their different philosophies, their different beliefs, but all tried to understand the mysteries of the existence and the relationship between the human beings and the cosmic orders. Means everyone wanted to know the cycle of birth, rebirth. It means what will happen after death. So they wanted to know the mysteries of the existence. And student, the background sacrifices and debates. That time the sacrifices were famous, especially in Rig Veda, where the hymns of Agni, Indra, Som were very famous. And student, Rig Veda, especially the time period of 1000 to 1500 BC, that time the Rasua Yag, Ashwamedh Yag were very famous, and sacrifices were very famous. So student, the background sacrifice and the debates. Debate किस पे हुआ? No doubt यहाँ पे जो है बहुत सारे थिंकर्स आ रहे थे जिनकी फ़िलॉसफी अलग थी. देन सेक्रीफाइसेस हो रहे थे ऋग्वेद के टाइम पे. लेकिन बच्चे जो डिबेट्स थी वो क्या थी? न्यू क्वेश्चंस दे स्टार्ट अराइजिंग अबाउट द लाइफ, अबाउट द डेथ, अबाउट द रीबर्थ. दैट टाइम these topics were hotly debated, especially the debates in Kugangrashala. Debates in Kugangrashala means जो बच्चे इसके ऊपर कुगाग्रशाला पे जो डिबेट हुई और उसका जो रिजल्ट आया, डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट फिलॉसफी दी इससे रिगार्डिंग. देन द क्वेश्चन अबाउट द अथॉरिटी ऑफ वेद्स एम्फेसाइज्ड ऑन द इंडिविजुअल एजेंसी. कुछ स्पेशली जो बुद्धा थे उन्होंने, बुद्धा इवन महावीर दोनों, इट मीन्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दे बोथ रेज्ड अ क्वेश्चन मार्क on the authority of Veds, and they mainly focus on the individual agency. It means every man and every woman, they should have the individual identity, and both they can achieve the salvation. Then the teachers, they traveled from one place to another to convince for the validity of the philosophy. और बच्चे जो बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म के टीचर्स थे, सिमिलरली महावीर, जैनिज़्म के टीचर, लाइक जितने भी थिंकर्स थे, दे स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू प्रमोट देयर रिलीजन, टू प्रमोट देयर फिलॉसफीज एंड द बिलीव्स. देन द मैसेज ऑफ महावीर, as you know, Vardhaman, बच्चे, it is Jainism, and there are total 24 तिरंकार्स. एंड स्टूडेंट, जो वर्धमान थे या जो महावीर थे, इट वॉज प्रिसीडेड बाय 23 तिरंकार्स. इट मीन्स 24 तिरंकार्स जो हैं जैनिज़्म में बहुत फेमस है, 24 गुरु, और वर्धमान जो हैं वॉज प्रिसीडेड बाय 23. ओके, अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म there are some teachings which is
very important in life. The first one is entire world is lively, entire world is animated, and non-injury to living beings. It means every person should believe in non-violence, then principle of ahimsa, same thing, the नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, किसी भी लिविंग बींग को इवन जो है उन्हें हमें मारना नहीं चाहिए. देन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू कर्मा. It means what we will do in future after rebirth, after death, sorry. It depends on the today's karma means the deeds done by us, the good deeds and the bad deeds done by us. So if we will do the bad deeds, then it will be not good after the death. So the cycle of birth and rebirth, कि हमें पुनर्जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, that depends on the karma. Then student, the next one is the monastic existence for the salvation. It means monastic existence is necessary for the salvation. Monastic existence means a religious way of life in which one renounces the worldly pursuits to devote oneself fully to the spiritual work. खुद को बिल्कुल पूरी तरह संसार के मोह माया से अलग करके कहाँ डिवोट करना, स्पिरिचुअल वर्क की तरफ. दैट इज़ द मोनिस्टिक एग्जिस्टेंस. और अगर हमें मोक्ष लेना है, अगर हमें सैल्वेशन लेना है, तो मोनिस्टिक एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. खुद को कट ऑफ कर लेना थ्रू द फ्रॉम द वर्ल्डली परसुइट्स एंड रिनाउंसिंग द वर्ड. फिर the next one is renouncing the word. renouncing the word means give up कर देना. the same thing कि जो word है, संसार का मोह माया, घर गृहस्थी सब त्याग देना. As student, there is 5 vows according to Jainism. The first one is to abstain from killing, then stealing, then lying. ना तो हमें झूठ बोलना है, ना चोरी करनी है, ना किसी को मारना है. टू ऑब्जर्व द सेलिबेसी. इट मीन्स अ कंडीशन ऑफ अनमैरिड, कहीं हमने मैरिज नहीं करनी. एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी, और किसी भी प्रॉपर्टी में खुद को नहीं फंसाना, किसी भी एसेट में, चाहे वो बेशक घर हो, कार हो, एनीथिंग. सो स्टूडेंट, it is better to win ourselves than to win a million enemies, according to Lord Mahavir. The Buddha and the quest for the enlightenment. Now Buddhism start हो गया. Jainism की हमने टीचिंग्स पढ़ी, अब बुद्धिज़्म की टीचिंग्स क्या है बच्चे. बुद्धिज़्म की जो हमें नॉलेज है या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी मिलती है, जिसमें सुता पिटाका बहुत फेमस है. सुता पिटाका में जो सर्मन्स हैं बुद्धिज़्म के, वो लिखे गए हैं. सिमिलरली जो हेजियोग्राफीज़ हैं, इट मीन्स द राइटिंग्स ऑफ द लाइफ ऑफ संट्स, दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द बुद्धिज़्म. एंड स्टूडेंट्स, बुद्धिज़्म में जो फेमस हैं वो हैं गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ फ्रॉम द साक्या क्लैन. ही एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ्स, meditated for the several days and finally attained the enlightenment. Especially student, जब उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, वो बहुत बुरा था. and finally he decided to leave his palace. The teachings of the Buddha is the reason and the persuasion. It means जो गौतम बुद्ध थे, he tried to convince the people not on the basis of supernatural powers but on the basis of reason and persuasion. It means अगर मैं कहूँ कि एक सुपर नेचुरल पावर, कि जादू से, कि देखो 1 के 2 हो गए या ये हो गया, उन्होंने कभी भी लोगों को ऐसे परसुएट नहीं किया कि वो बुद्धिज़्म फॉलो करें. उन्होंने ऑलवेज एक थ्योरी रखी कि ये अगर कुछ ऐसा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका क्या रिज़ल्ट होगा.
So, according to Gautam Buddha, the world is transient and constantly changing. बच्चे ट्रांजेंट मीन्स कहते हैं ना एक चीज़ दैट लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए होना. द वर्ल्ड इज़ अ ट्रांजेंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है. एवरी नथिंग इज परमानेंट, ट्रांजेंट, क्षणिक भर होना. एंड सोरो, दुख, इज द इंस्टिंक्ट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. शायद ये जो दुख है ये इंटरनल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का. सेवरल पैनिकी एंड सेल्फ इंडल्जेंस इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द सोरो. तपस्या एंड सेल्फ इंडल्जेंस. सेल्फ इंडल्जेंस मीन्स टू cut oneself from the desires, from the whims. खुद के डिज़ायर्स कम कर लेना. सेल्फ इंडल्जेंस होना मतलब सेल्फ कंट्रोल होना कहीं ना कहीं इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सॉरो. जब मेरी इच्छाएं नहीं बढ़ेंगी तो ऑफकोर्स मुझे उतना ही दुख कम होगा. देन ही ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल एजेंसी, righteous path as a means to escape from the cycle of rebirth. And the last lines by the Gautam Buddha was, be lambs unto yourself, as all of you must work out your own liberation. And student, here you can see a picture of Lord Buddha. It is easy to see the faults of other but difficult to see one's own faults. Student, this was the revision video of this chapter. The video the videos I have already shared in which I discuss this chapter in detail. So this was just a glimpse of the chapter. I hope this is clear to you. Thank you, students.